Well, dear student, today our topic is language disorder. So first of all, we are going to see what is language disorder. Language disorder or language impairments are disorders that involve the processing of linguistic information. Problem that may be experienced can involve grammar, syntax, or morphology, semantics, or other aspects of language. Children who have language disorder have trouble understanding language and communicating. जिन बच्चों को लैंग्वेज डिसऑर्डर का प्रॉब्लम होता है वो बोलने के दौरान और बातों को और वर्ड्स को समझने में डिफ़िकल्टी फील करते हैं. So in this lecture today, we are going to study what are different types of language disorder. So let's get started. Language disorder or language impairments are disorders that involve the processing of linguistic information. Problem that may be experienced can involve grammar. इसमें grammar से related problems हो सकते हैं. Related to syntax or morphology. What is morphology? Morphology is the study of form of things, or it is the study of shapes or structure. Impairment को अगर हम देखें तो impairment mean a drastic reduction in the recoverable amount of a fixed asset. For example, we can say loss of limbs, loss of vision, memory loss is the example of impairment. अगर किसी को देखने में कोई प्रॉब्लम है, चलने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, so these are the examples of impairment. As far as language disorder examples are concerned, इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अफेजिया की. लैंग्वेज डिसऑर्डर कैन इफेक्ट बोथ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेजेस. ठीक है, अगर लैंग्वेज डिसऑर्डर होगा तो उसमें रिटन लैंग्वेज और स्पोकन लैंग्वेज दोनों पर ही अफेक्ट पड़ेगा. एंड कैन ऑल्सो अफेक्ट साइन लैंग्वेज टिपिकली एंड फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज विल बी impaired. So now we are going to study receptive language disorder. Receptive language disorder. It is the understanding of language input. ठीक है, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग से ये रिलेटेड है. इट्स मीन दैट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड लैंग्वेज हर्ड और रेड. लैंग्वेज चाहे वो सुनी है या पढ़ी है, उसको समझने से रिलेटेड जो एबिलिटी है उसको कहते हैं रिसेप्टिव लैंग्वेज. A receptive language disorder is an impairment in the comprehension of a spoken, written, gestural or other symbol system. It also affects the social and academical life. ठीक है, इसका ताल्लुक जो है हमारी सोशल और एकेडमिकल लाइफ से होता है. ठीक है, समाजी और तालीमी ज़िंदगी से. और रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर में समाजी और तालीमी ज़िंदगी दोनों ही बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होती हैं. अंडरस्टैंडिंग द मैसेज कमिंग फ्रॉम अदर. इसका मतलब ये भी होता है कि दूसरे लोग जो आपसे बात कर रहे हैं उस मैसेज को, उस पैगाम या इंफॉर्मेशन को समझना. जहाँ तक कि इसके सिम्टम्स का ताल्लुक है, सो देयर इज़ नो स्टैंडर्ड सेट ऑफ सिम्टम्स. इनके कोई हम ये नहीं कह सकते कि कोई मखसूस किस्म के इसके जो है वो सिम्टम्स हैं जो कि इंडिकेट करें कि ये रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है. सिंस इट वेरीज फ्रॉम वन चाइल्ड टू नेक्स्ट, क्योंकि हर बच्चे में ये मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स होते हैं. हाउएवर सिम्टम्स में इंक्लूड, जो जनरल किस्म के सिम्टम्स हैं उसमें हम देखते हैं नॉट सीमिंग टू लिसन व्हेन दे आर स्पोकन टू. ठीक है, जब उनसे बात की जाती है तो लगता है कि वो सुन नहीं रहे. अपेयरिंग टू लैक इंटरेस्ट व्हेन
स्टोरी बुक्स आर रेड टू देम, जब उनको स्टोरी सुनाई जाती है तो ऐसा लगता है कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे या बहुत कम इंटरेस्ट ले रहे हैं. एबिलिटी टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वी कैन से दैट इनएबिलिटी टू फॉलो वर्बल इंस्ट्रक्शंस, कि जब इन बच्चों को inability to understand complicated sentences. Students are not able to understand difficult sentences. Secondly, inability to follow verbal instructions. स्टूडेंट इस काबिल नहीं होते कि किसी भी वो वर्बल इंस्ट्रक्शन को समझ सके. मोर ओवर पैरटिंग वर्ड्स. पैरटिंग मीन कि वो चीज़ों को, वर्ड्स को रट्टा लगाना, और फ्रेजेस ऑफ थिंग दैट आर सेड टू देम, चीज़ों को वो रट्टा लगाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते. लैंग्वेज स्किल्स बिलो द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ देयर एज, कि जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं वो जिस एज ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं उस लेवल से कम होती हैं. आवर नेक्स्ट लैंग्वेज डिसऑर्डर टाइप is expressive language disorder. Basically, is a communication disorder in which there are difficulties with spoken or written expression. Means this is the language disorder जिसमें students और बच्चे particularly spoken और written expression में problem face करते हैं. Spoken or written expression. Expressive language is most simply the output of the language. This include not only words but also the grammar rules that indicate how words are combined into phrases, कि किस तरह से word मिलकर phrases बनाते हैं. Then sentences, उनसे sentences बनते हैं further, और फिर paragraphs बनते हैं. As well as the use of gestures and facial expressions. ये तमाम expressive language disorder का पार्ट हैं. Well, as far as the symptoms of expressive language disorder are concerned, children with an expressive language disorder have problem using language to express what they are thinking or need. यानी कि स्टूडेंट जो सोच रहे होते हैं और जो उनकी ज़रूरियात हैं उससे रिलेटेड वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते. हैव अ हार्ड टाइम पुटिंग वर्ड टुगेदर इनटू सेंटेंसेस. अपने वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंसेस बनाने में उनको काफ़ी दिक्कत का सामना होता है. और देयर सेंटेंसेस में बी सिंपल, शॉर्ट एंड द वर्ड ऑर्डर में बी ऑफ. उनके सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा सादे, सिंपल, मुख्तसर, और उसमें ऑर्डर जो है वो कम ही नज़र आता है, सीक्वेंस ज़्यादातर नज़र नहीं आता. नेक्स्ट वी ऑब्जर्व दैट दे हैव डिफ़िकल्टी फाइंडिंग द राइट वर्ड व्हेन टॉकिंग, कि जब वो बात कर रहे होते हैं तो उन्हें अप्रोप्रिएट वर्ड, सूटेबल वर्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वर्ड की सिलेक्शन को और उनको फाइंड आउट करने में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं वो बच्चे. हैव विकैबुलरी दैट इज़ बिलो द लेवल ऑफ अदर चिल्ड्रन दैट सेम एज, यानी कि अपने ही जैसे एज ग्रुप के बच्चों में अगर कंपेयर किया जाए ऐसे बच्चों को तो उनका विकैबुलरी लेवल उन स्टूडेंट से, उन बच्चों से बिलो होता है. यूज सर्टन फ्रेजेस ओवर एंड ओवर अगेन. ऐसे डिसऑर्डर का शिकार लोग जो होते हैं वो मखसूस किस्म के फ्रेजेस को बार बार इस्तेमाल करते हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिम्टम इज़ दैट कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं. फ्रस्ट्रेशन का शिकार होने से डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, ज़्यादातर अपसेट रहते हैं, मायूसी का शिकार रहते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पीच डिसऑर्डर. स्पीच डिसऑर्डर या जिसको हम स्पीच इम्पेडमेंट्स भी बोलते हैं आर द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर. ये कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की ही टाइप्स हैं वेयर नॉर्मल स्पीच इज डिसरप्टेड.
कि जो आम स्पीच होती है वो डिस्टर्ब होती है. दिस कैन मीन शटरिंग, लिप्स, etc. Someone who is unable to speak due to a speech disorder is considered mute. एक और टाइप होती है दैट इज कम्युनिकेशन डिसऑर्डर. कम्युनिकेशन डिसऑर्डर इज एनी डिसऑर्डर, किसी भी किस्म का डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स समबॉडीज एबिलिटी टू कम्युनिकेट. ऐसा कोई भी डिसऑर्डर जो किसी इंसान की कम्युनिकेशन की एबिलिटीज को मुतासिर करे वो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर कहलाता है. द डिलेज and disorder can range from simple sound substitution to the inability to understand or use one native language. तो ये तमाम अगर देखा जाए इस प्रॉब्लम का शिकार जो लोग होते हैं मेनली वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम फील करते हैं. इसके अलावा अपनी ही नेटिव लैंग्वेज को भी समझने में वो मुश्किलात का शिकार होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर कि डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कितनी किस्म का होता है, उसकी कितनी इकसाम है. वेरी फर्स्ट इज सेंसरी इम्पेयरमेंट, देन अफेजिया, नेक्स्ट वी हैव dyslexia, dysgraphia, shuttering, Down syndrome, autism, ADHD. Now we are going to discuss in details one by one all of these types of language disorder. So let's proceed. The very first is sensory impairment. Sensory impairment क्या होते हैं? इसकी दो इकसाम हैं. Number 1, blindness and deafness. Blindness, a link between communication skill and visual impairment with children who are blind, is currently being investigated. It impairs one's speech ability. One cannot recognize gesture, facial expressions. ठीक है, ये ऐसी इनएबिलिटी है जिसमें जेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशंस को पहचाना नहीं जा सकता. सेकंड इज डेफनेस, फ्रीक्वेंट एयर इन्फेक्शन. ठीक है, उसमें रिलेटेड टू हेयरिंग प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. ट्रबल विद हेयरिंग ड्यूरिंग लैंग्वेज एक्विजिशन may lead to spoken language problems. Children who suffer from frequent ear infection may temporarily develop problem pronouncing words correctly. कैसे बच्चे वर्ड्स को एक्यूरेटली प्रोनाउंस नहीं कर सकते. Our next type is aphasia. Aphasia is general term. It can cause problem in parts of body such as arms and legs. ठीक है, किसी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम हो सकता है. Aphasia of speech is a motor speech disorder. It caused by damage to the part of brain related to speaking. इनके ब्रेन के अगर किसी भी पार्ट में या ब्रेन में कहीं पे भी कोई डैमेज आ जाता है उसकी वजह से अगर स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम है दैट इज कॉल्ड अफेजिया. अब जो अफेजिया से रिलेटेड स्पीच प्रॉब्लम का शिकार होते हैं ऐसे बच्चे दे ट्रबल सीक्वेंसिंग द साउंड्स इन सिलेबल एंड वर्ड्स. वो सिलेबल्स और वर्ड को सीक्वेंस में अरेंज नहीं कर सकते. द सेवेरिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ब्रेन डैमेज. और अगर इसकी हम शदीद असरात की तरफ जाएं तो ब्रेन के डैमेज पर ये टोटली जो है वो इन्हिसार करता है कि ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता. As far as the symptoms of aphasia are concerned, we can say that कि एक तो डिफ़िकल्टी होती है इमिटेटिंग स्पीच साउंड्स. बच्चों को साउंड्स को जब इमिटेट करना होता है उसको फॉलो करके वो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, उस दौरान वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील करते हैं. देन डिफ़िकल्टी इमिटेटिंग नॉन स्पीच मूवमेंट
ओरल अफेजिया इसे कहते हैं, सच एज स्टिकिंग आउट देयर टंग, ग्रोपिंग व्हेन ट्राइंग टू प्रोड्यूस साउंड्स, और स्वेयर किस्म के केसेस में इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड एट ऑल, कि ऐसे बच्चे बिल्कुल भी साउंड प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। इनकंसिस्टेंट एरर, स्लो रेट ऑफ स्पीच, या उनकी स्पीच का जो रेट है वो बहुत स्लो होता है। समवट प्रिजर्व्ड एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑटोमेटिक स्पीच, कि खुद से वो स्पीच या कोई भी बोलना या रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। रॉड स्पीच होती है, ठीक है, सच एज ग्रीटिंग लाइक हाउ आर यू, एक वर्ड एक फ्रेज उन्होंने याद कर लिया है तो वो उसी फ्रेज या सेंटेंस को ही क्रैम करेंगे, रिपीट करेंगे, यानी कि प्रोडक्टिविटी नहीं होती अफेजिया के सिम्टम्स में। आवर नेक्स्ट लैंग्वेज डिसऑर्डर इज डिसलेक्सिया। जहां तक डिसलेक्सिया का ताल्लुक है, डिसलेक्सिया is a learning disorder that involves difficulty reading due to problem identifying speech sound and learning how they relate to letters and words. And this is also called reading disability. Dyslexia को हम reading disability भी बोलते हैं। So dyslexia or development reading disorder is characterized by difficulty with learning to read fluently and with accurate comprehension despite normal or above average intelligence. This includes difficulty with phonological awareness, decoding, pressing speed, orthographic coding, auditory, short term memory, language skill। auditory जैसा कि आप लोग जानते हैं साउंड से रिलेटेड है, लैंग्वेज स्किल है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन एंड रैपिड मीनिंग। डिसलेक्सिया इज द मोस्ट कॉमन लर्निंग डिफिकल्टी एंड मोस्ट रिकग्नाइजिंग रीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, इसको मेनली रीडिंग डिसऑर्डर ही कहा जाता है। इसके इफेक्ट्स की तरफ अगर हम बात करते हैं तो डिसलेक्सिया कैन इफेक्ट पीपल डिफरेंटली, डिफरेंट पीपल में ये डिफरेंट इफेक्ट्स हमें नजर आते हैं। सम विद डिसलेक्सिया कैन हैव ट्रबल विद रीडिंग एंड स्पेलिंग, कुछ में ये रीडिंग और स्पेलिंग से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जबकि दूसरे जो है वो राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करते हैं। और टू टेल लेफ्ट फ्रॉम राइट, सम चिल्ड्रन शो फ्यू साइंस of difficulty with early reading and writing, but later on they may have trouble with complex language skills जैसे कि grammar, reading comprehension and more in-depth writing. Dyslexia can also make it difficult for people to express them clearly. It can be hard for them to use vocabulary, structure of their thought during conversation. Next is autism. What is autism? Autism is a development disorder characterized by difficulties with social interaction and communication, and by restricted and repeated behavior. Parents often notice signs during the first 3 years of their child's life. Now, as far as the subtype of autism include autistic disorder, Asperger's syndrome, Rett syndrome, childhood disintegrative disorder, pervasive development disorder. Dysgraphia क्या होता है? The word dysgraphia comes from the Greek word dys mean impaired and graphic mean writing by hard. Dysgraphia is the deficiency in the ability to write, mainly in terms of handwriting but also in terms of coherence as well. Dysgraphia is a transcripting disability, meaning that is a writing disorder association with impaired handwriting, orthographic coding and finger sequencing. They may lack basic grammar spelling and often will write the
रॉन्ग स्पेलिंग वाइल राइटिंग देयर ओन थॉट्स ऑन द पेपर, कि जब वो बच्चे अपनी क्रिएटिव राइटिंग करते हैं तब वो रॉन्ग स्पेलिंग्स लिखते हैं. शटरिंग क्या होती है? शटरिंग मीन्स स्पीच डिसऑर्डर in which sounds, syllables, or words are repeated or prolonged, disrupted the normal flow of speech. इस किस्म की जो होती है may be accompanied by struggling behavior such as rapid eye blink, बार बार आंखों का झपकना, tremors of lips. ये इसकी कुछ साइंस हैं. As far as the causes of shuttering are concerned, जिसमें possible cause of persistent shuttering include abnormalities in speech motor control. Some evidence indicate that abnormalities in speech motor control such as timing, sensory and motor coordination are implicated. कुछ genetic problem होती हैं, कुछ medical condition इसमें involve होती हैं. Shuttering can sometimes result from a stroke, trauma or other brain injury. Mental health problem भी इसमें involve होती हैं. In rare isolated cases, emotional trauma can lead to shuttering. Down syndrome की अगर हम बात करें, is a genetic abnormality होती है. ठीक है. This syndrome occurs because of an extra copy of chromosome 21. Your chromosome contain your genetic material, and other problem with your chromosomes can cause serious physical and mental health problem. It is typically associated with physical growth delays, यानी कि physical जो growth है वो बहुत late हो जाती है. ठीक है. और इसमें खासकर जो facial features हैं and mild to moderate intellectual disability होती है. The average IQ of a young adult with Down syndrome is 50, equivalent to the mental age of 8 or 9 years old child. But this varies widely. यानी कि हमें ये डिफरेंट बच्चों में इसमें डिफरेंट जो इफेक्ट्स हैं वो नजर आएंगे. आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो वो क्लियर हो गया होगा रिलेटेड टू लैंग्वेज डिसऑर्डर. थैंक यू.